Hello traders, this is Anirudh here. So today we will analyze the Bank Nifty with the very basic of the price action as well a little bit on the advanced stage of Fibonacci and some WD GAN trading strategy. Now let's start with the very start of this 25th of October 2021. If we see that there is a trend line I draw, and once the market break the trend line, market is going on the upward side direction, and the upward is still on the continuation basis for the option writers. So now if we again go through this one more trend line extended version, you can see the market is expecting this upward range also. Now at the same time, if I draw this trend line over here from this low to that high and extend it on the right hand side, we can see now that market break this trend line, and now the breakdown on this side just got the confirmation. So based on that, the previous trend line is ended and ended its value, and now the new trend line is taking the area. And on the Fibonacci basis, if I see the 1.272 level is playing its part on this side, sorry, not the reverse one but the extended. Okay, now you can see 1.272 level से market नीचे की तरफ आ रहा है, and we just get a very solid confirmation on the bearish side. The second thing is this one. Now let's hide this one and draw another trend line. So we can see now that 0.5% का जो लेवल था 37,900 का जो लेवल था, मार्केट ने वो लेवल तोड़ दिए हैं, and after breaking market is still coming below this 0.5% लेवल, और उसके साथ यहाँ पर 0.618 लेवल के ऊपर थोड़े बहुत क्लोजिंग दिया है. तो मेरे हिसाब से मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिगर मूव ऑन एनी साइड, एंड वो मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूएशन पे जाने वाला है, क्योंकि यही यूजुअली होता है. 0.5 0.618 से मार्केट आइदर रिवर्स करते हैं और इट सस्टेन्ड, एंड बिलो द 0.5 इट change its trend. Now the question is, if you see the size of this trend, which started from this 0.786 to it closes at the very near of the 0.318 level. तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो अपर वाला साइड जो रेंज का मूवमेंट है, ये कम से कम टाइम में क्लियर करना चाहता है, और सेम टाइम पे मार्केट इज स्टार्टेड फॉलिंग. और ये जो 16th और 17th फरवरी का जो कैंडल है, द बियरिश प्रेशर इज वेरी मच ऑन द हायर साइड, एंड मार्केट जस्ट लेफ्ट इट्स गैप. मतलब ये गैप जो था वो क्लियर हो गए हैं मार्केट के. तो मार्केट जब गैप क्लियर करते हैं बहुत जल्दी, इसका मतलब देयर इज समथिंग इज फॉर्मिंग विद इन द मार्केट दैट वी डोंट नो. As a retail trader, don't expect that we are going to know everything on the market, but we can assume it on the basis of very basic candlestick formations. Now the third thing is this support, the 8th of February 2022 support is market holding. And the another thing we can find it out is very important कि ये जो कैंडल है 18th of February का कैंडल, यहाँ पर हम rather than we think this is a buying, but we can think this is a little bit of profit booking happened over here after the market booked the profit of this very important the bullish candlestick formations. और ये टॉप से मतलब 3rd of February से इस महीने का अगर आप देखें तो कंप्लीटली 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से मार्केट में कंप्लीटली सेल ऑफ चल रहे हैं, और कुछ दिन कुछ बाइंग्स हुए हैं. तो मेनली मार्केट अभी ये जो रेंज बन रहा है, इस रेंज से बाहर आकर ट्रेड करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और जस्ट बिकॉज द 0.5% इज लेफ्ट ओवर हियर,
So I am not expecting market will go above it. If the market is go above it, the market will blast on the upward side. But if not, it is assuming that 37,540 below one day closing will drag the market up to 35,545 of the 1.272 level. Because the previous range of the 1.272 market respected a lot. So we can expect this range on the downward side also. Now, another thing in this clear formation of this triangular pattern over here, we can expect that market will break, as market is already break this pattern on the downward side, and it was not able to hold this complete pattern. ऊपर से मैं अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला रेंज का ही कैलकुलेशन कर लूँ, थोड़े ये वाला जो रेंज है इसका कैलकुलेशन कर लूँ, so you can see now very defensive playing is happening at this 0.5% level, 0.618 level और 0.786 level. ऊपर से अगर फिबोनाची के थोड़े एडवांस में जाना चाहते हैं हम, then we can also add the 0.886 level over here. तो 0.886 लेवल का जो 886 और 887 both are almost सेम, तो उसी लेवल के नीचे भी मार्केट उसी लेवल के थोड़े ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिए हैं. तो उस हिसाब से अगर हमें देखना चाहते हैं तो छोटे से रिस्क और बिग रिवॉर्ड के साथ वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल नॉट एबल टू होल्ड. I mean, market is holding this level properly with creating this distribution zone at here. Okay. तो हम लोग नेक्स्ट वीक में ये वाला जोन जो है इस वाला जोन पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन के तहत हम लोग प्ले कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, एंड वी कैन इजीली थिंक दैट वी कैन गेट अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस पर्टिकुलर जोन. Now, one more thing, this is beyond the trading, but you can understand that ruining weekend with thinking about what is going to happen in the Monday, Tuesday, Wednesday, it not take any kind of sense at all. It will just ruin your personal timing. Okay, क्योंकि पैसे हम लोग कमाते हैं to get a good life. But if you're not able to enjoy your weekend, definitely it is not going to take. तो जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आते हैं पोजिशनल ट्रेड्स में उतना मत जाइए नेगेटिवली, rather than play intraday, rather than play hedge on positionally. That will give you much more perspective, much more transparency to your own trades. Okay, so that is from my end today. And yes, I just need to I just forget about the okay, just one more thing. सेव कर लेते हैं थोड़ा, और इसमें थोड़े गैन के कुछ टचेस हम लोग फिल करते हैं. ठीक है, वेरी बेसिक गैन आई विल ऐड लाइक 37,000. Let's add this number of the 37,777. This is a very strong number, GAN के. GAN very strong number of WT GAN this is. तो ये वाला लेवल के नीचे अगर जब तक मार्केट है, we will keep staying bearish. और as the market is previously also came below this level but not able to hold this level, but again gone up, but ऊपर जाने के बाद भी ज़्यादा मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाया. And same time, the previously whenever market trying to break this level, it was not able to go down on a single shot. Okay, तो ये वाला पार्ट अगर आपको देखना है हिस्टोरिकली, बिकॉज WT GAN इज ऑल अबाउट रीडिंग द पास्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तो ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप ये वाला पार्ट को देखें एक बार, कैन मार्केट रिपीट द सेम. तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, इट फॉल अगेन, मार्केट वाज नॉट एबल टू गो ऑन द अपवर्ड साइड, अगेन इट राइजेस. ओके, तो बिग मूवमेंट यहाँ पर भी आए थे. तो आफ्टर दैट मार्केट फॉल, तो हम यहाँ पर फॉल या राइज को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बिग मूवमेंट की वेट कर रहे हैं. तो मान लो अगर ये वाला मूवमेंट सेम तरीके से हुआ है, मार्केट मेक द लो हायर लो, नाउ एट द सेम साइड मार्केट इज कीप ऑन
counting the low, the higher low. Okay, now market is on this situation. मार्केट अभी ये वाले सिचुएशन पे है जैसे कि 4th of October के अराउंड था. अब आफ्टर द अक्टूबर मार्केट राइज of about 8 to 10%. So we can expect this same kind of situation over here now. The problem is you are going to be biased, but I will not become biased anytime. मैं biased नहीं होता. मैं सिर्फ क्या करता हूँ, bullish जो पहले positions होते हैं वो मेरे quantities छोटे रहते हैं because I rate some data and according to that data the market may be on the selling side more. तो डेफिनेटली बुलिश जब पोजीशन होगा मैं पोजीशंस थोड़े कम लूंगा, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे बुलिश में भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस मिले, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, आई विल जस्ट कीप ऑन एडिंग पोजीशंस ड्यू टू द पिरामिड बेसिस. बट एट द सेम टाइम अगर मुझे बियरिश पोजीशन देखने को मिले 8 से 10% नीचे की तरफ, आई विल एड मोर बिकॉज कभी भी फॉलिंग मार्केट में ज़्यादा पैसे रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखो ये भी मूवमेंट 10% का ही है और ऊपर के भी अगर मूवमेंट मुझे देखना है 10% का मूवमेंट अराउंड ये वाला हाई ही मतलब ये वाला हाई के करीब ही है. तो मूवमेंट किसी भी तरफ हो, चाहे मेरा एनालिसिस सही हो गलत हो, मार्केट ऊपर की तरफ जाए 40,000 क्या 1 लाख भी चला जाए बैंक निफ्टी, आई विल नॉट माइंड, आई विल मेक द प्रॉफिट, बट डेफिनेटली यू शुड नॉट बी बियस्ड ऑन द मार्केट. Okay, so that is from my end today and I will see you in my next video. Okay.